So, in life, the people have so many questions. तो जीवन में लोगों के बहुत प्रश्न होते हैं. It's also one sloka in the Bhagavad 1:2.5. तो इसके विषय में एक श्लोक भी है भागवत में 1, 2 और 22. And one friend of me in Tirupati, he made actually from the Bhagavatam 500 questions. और ये मेरे समक्ष तिरुपति में ने ये एक कैलेंडर जैसे बनाया, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं भागवतम के विषय में. And these questions is questions in life. Who am I? Who is God? Who created everything? How to come out of the miseries of life? और ये प्रश्न जीवन में कि मैं कौन हूँ और किसने ये ब्रह्मांड बनाया, कि कैसे इस जीवन से बाहर निकला जाए. And what is the most urgent question at this moment? Somebody has some idea about that? और सबसे प्राचीन प्रश्न कौन सा है इस समय में? किसी को कुछ इस पे बता सकते हैं? Somebody can give some answer about this? क्या कोई उत्तर देना चाहिए? Nobody have any idea what is the most urgent question at this moment? किसी को कुछ आइडिया है कि सबसे जरूरी प्रश्न क्या है इस समय पे? Everybody is aware what he is doing in daily life. क्या आप सब जागरूक हैं कि आप अपने रोज के जीवन में क्या कर रहे हैं? If you see, 1 week ago, there was riots in Nandapur. अगर आप एक हफ्ते पहले देखें तो यहाँ पे दंगे हुए थे. So actually, there is also one question here: how is world peace attained? तो यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है कि कैसे जो ये जगत की शांति है ये कैसे हो पाएगी? Actually, at this moment, it is the most urgent question. अभी इस समय पे ये सबसे जरूरी प्रश्न हो सकता है. Because it's not only here, it's also on the big scale, all over the world. There is so many tribulations going on. क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये बड़े स्तर पे भी सब जगह ये चल रहा है. And BRICS has started. Somebody heard about BRICS? BRICS has started. Yes. BRICS has started, and that BRICS means that India and 100 other countries have separated themselves with business from the Western world. तो अभी इस तरीके से कुछ चालू हो गया कि जो इंडिया है और कुछ अलग देश हैं वो बाहर के देशों से अपने को अलग करने लगे हैं बिजनेस के मामले में और बाकी मामलों में. And that is actually a big thing. और असल में ये बहुत बड़ी चीज है. Because the West will not accept this. क्योंकि पाश्चात्य देश इसे स्वीकार नहीं करेंगे. So the West will not accept this. तो पाश्चात्य देश इसको स्वीकार नहीं करेंगे. So that means that there will come trade war and probably also world war. तो इससे हो सकता है कि ये विश्व युद्ध के रूप में आगे बढ़े. So how to get world peace, that is the talk about. I don't have network. You have network here? तो कैसे जो विश्व शांति है इसको लाया जाए, इस विषय में कुछ बात कर सकते हैं. Somebody has network? Otherwise you can start with in Hindi. 1:2:6:28. 2:6:28.
Nobody has network, huh? इंग्लिश में उनके पास You're all very detached, huh? Nobody has smartphone, huh? You're very detached. डायरेक्ट से सर्च कर लीजिए वेदाबेस 26 क्या नहीं होता है इंग्लिश में आएगा तो हिंदी में और इमेज में तो अनुवाद बस है नहीं आएगा तो It's useful for book distribution. We cannot depend on smartphones. Better have other books. ट्रांसलेट करो कौन सा है 26 You can read Korean. English, huh? English. Okay, so you do it with speeds. 28, not 26. 26. 28. Yes. How you go to the next? Iti samrita sambara prasa kaya teraham tameka pusam yakyam tenai kyatyam ishvaram. Iti samrita sambara prasa kaya teraham tameka pusam yakyam tenai kyatyam ishvaram. Iti samrita sambara prasa kaya aham tameka pusam yakyam tenai kyatyam ishvaram. What? इति इस प्रकार समृता संपन्न संभारः अपने आप को सुसज्जित किया पुरुष भगवान को अव्यवह अंगों द्वारा अहम मैं तम एवा उनकी पुरुषम भगवान को यज्ञम समस्त यज्ञों के भोक्ता तेन एवा उन सब द्वारा अयजामा पूजित ईश्वरम परम नियंता अनुवाद इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता ईश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ की सामग्री और साज सामान की रचना की और मैंने परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ संपन्न किया। सामान्यतः लोग हमेशा मन की शांति या विश्व में शांति पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे
नहीं जानते कि विश्व में शांति का ऐसा मानव कैसे प्राप्त किया जाए। विश्व में ऐसी शांति यज्ञ और तपस्या के आरंभ से प्राप्त की जा सकती है। भगवद गीता 5:29 में निम्नलिखित नुस्खे की सिफारिश की गई है। भोक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां यज्ञ माम शांति माम गच्छति। कर्मयोगी जानते हैं कि परमेश्वर के सभी यज्ञों और तपस्वी जीवन के वास्तविक भोक्ता और पालन करता है। वे यह भी जानते हैं कि परमेश्वर सभी ग्रहों के परम स्वामी हैं और सभी जीवों के वास्तविक मित्र हैं। ऐसा ज्ञान कर्मयोगियों के निष्काम भक्तों की संगति के माध्यम से धीरे धीरे भगवान के शुद्ध भक्तों में परिवर्तित कर देता है और इस प्रकार वे भवबंधन से मुक्त होने में सक्षम हो जाते हैं। भौतिक जगत के आदि जीव ब्रह्मा में हमें यज्ञ का मार्ग बताया है। यज्ञ शब्द से तात्पर्य है अपने स्वार्थ को दूसरे व्यक्ति की संतुष्टि के लिए समर्पित कर देना। सभी कार्यों का यही तरीका है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करने में लगा रहता है, चाहे वह परिवार, समाज, समुदाय, देश या संपूर्ण मानव समाज के रूप में ही हो। लेकिन ऐसे यज्ञों की पूर्णता तब प्राप्त होती है जब वे परम पुरुष भगवान के लिए किए जाते हैं। क्योंकि भगवान ही सभी चीजों के स्वामी हैं, क्योंकि भगवान ही सभी जीवित प्राणियों के मित्र हैं और चूंकि वे ही यज्ञकर्ता के पालन करता है, साथ ही यज्ञ की सामग्री की आपूर्तिकर्ता भी वही है। इसलिए सभी यज्ञों से केवल उन्हीं को संतुष्ट किया जाना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। पूरी दुनिया विद्या की उन्नति, सामाजिक उत्थान, आर्थिक विकास और मानवीय स्थिति के समग्र सुधार की योजनाओं के लिए ऊर्जा का त्याग करने में लगी हुई है, लेकिन कोई भी भगवान के लिए त्याग करने में रुचि नहीं रखता, जिसकी भगवद गीता में सलाह दी गई है। इसलिए दुनिया में शांति नहीं है। यदि मनुष्य दुनिया में शांति चाहते हैं तो उन्हें सभी को परम स्वामी और मित्र के हित में त्याग करना चाहिए। ओम ज्ञानति मामस्या कमलया सत्या सत्सु उन्मेतमा तस्मै गुरुवे नमः। नारायणं श्रीचं परम सुखदायकं देवीं सरस्वतीं दशं ततोऽयम् उदीरयत्। हम देहं श्रीकृष्णं वैष्णवं श्रीरूपं सकदारतं तद्दीपं सत्वैतं सर्वदुःखपरिकरसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदं सारलित श्रीकृष्ण सा। Namo Om Vishnudev Krishnadev Putre Srimati Bhakti Goswami Nityanamne. Namo Om Vishnudev Krishnadev Putre Srimati Bhakti Goswami Nityanamne. Namaste Saraswati Devi Gauracharane Nirvishesh Shunyapadi Pasatyade Sarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Pasadi Gaura Bhaktinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. It's a wonderful explanation about how to get world peace. ये आश्चर्यजनक समझाया गया है कि कैसे हम विश्व शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ये आश्चर्यजनक तरीके से समझाया गया है कि हम कैसे विश्व शांति को प्राप्त कर सकते हैं। And actually, it starts on the lower platform, not on the macro platform, the micro platform, to get peace. और असल में ये निम्न स्तर पे चालू होता है, ऐसा नहीं कि उच्च स्तर पे चालू होता है कि हम कैसे जो शांति है उसको प्राप्त कर पाएं। Because it starts on the micro platform, the individual soul thinks that he is the doer, but in actuality is done by the material nature. कि जो जीव है वो समझता है कि वो करता है, पर असल में ऐसा नहीं है। So then already the problem starts in the society, in this material world. तो इस तरीके से जो समस्या है वो चालू होती है सोसाइटी में, समाज में, इस भौतिक जगत में। Everybody tries to take the fruits of his activities and tries to enjoy the fruits. हर कोई अपने जो कर्मों के फल हैं उसको भोगने का और उसको लेने का प्रयास कर रहा है।
And then there will be competition. We can see with schools in India very nicely. Schools, so much competition is going on. On the billboard you see 99 points, other has 99.5 for the exams. और यहाँ पे फिर भागदौड़ होती है, सब लोग अलग अलग स्कूल्स में और सब जगह जाते हैं। आप देख सकते हैं पोस्टर्स में कि वैसा एडवर्टाइज करते हैं कि 99%, 99.9%, सब जगह इस तरीके से हमें देखने को। It's really crazy. That people, that parents did actually accept or encourage this kind of competition. It's actually a very kind of demonic kind of consciousness. ये असल में एक पागलपन है कि कैसे जो माता पिता भी हैं वो इस प्रकार की जो भागदौड़ है उसको स्वीकार करते हैं, और ये असल में एक तरीके से आसुरिक स्वभाव है। That is this kind of to excel above other living entities, to put themselves up, this kind of consciousness, this ahankar. तो ये जो चेतना है कि दूसरों से आगे निकलना, अपने आप को दूसरों से ऊपर रखना, ये अहंकार है। And it goes to such a platform, such a kind of misery that actually all over India, maybe students is the #1 suicide cases all over India. और ये इसी तरीके से बढ़ता है। हम देख सकते हैं कि भारत में वो नंबर 1 पे हैं, जिसमें जो शिष्य हैं, वो जो छात्र हैं, वो सुसाइड आत्महत्या करते हैं। Because there is so much pressure from the environment, from the family, from the parents to be the #1 in the class or all over the school. क्योंकि उनके ऊपर बहुत दबाव है कि परिवार से, उनके बाकी लोगों से, कि वो नंबर 1 रहे अपनी क्लास में या फिर पूरे स्कूल में। And I saw in Brother Vikanaka when I was doing Chapa, Hare Krishna mantra, 2:30 in the morning. I saw students behind the books, 2:30 in the morning, behind the books, falling asleep and trying to learn 2:30 in the night. जब मैं एक बार 2:30 बजे सुबह जग कर रहा था तो मैंने देखा कि जो छात्र हैं वो अपनी पुस्तकों को लेके बैठे हैं, वो अपनी पुस्तकों के सामने सो रहे हैं। Very, very sad kind of condition that the living entity is pushed so hard for his exams that in the night, out of anxiety that maybe he will not be the #1, he's learning like crazy. ये असल में जीव के लिए बहुत ही दुख की स्थिति है कि कैसे उसको इसमें दौड़ाया जा रहा है कि उसको दुखी करने का और विचलित करने का प्रयास किया जा रहा है कि उसको नंबर बनाना। It's very, very sad kind of condition. 2:30 in the night, that is the time for the living entity to actually start his spiritual, start his real welfare activity. ये बहुत दुख की स्थिति है जीव के लिए। रात के 2:30 बजे असल में ये समय होता है कि हम अपनी जो आध्यात्मिक गतिविधियां हैं उसको हम प्रारंभ करें। And to study, but they need a lot of coffee, a lot of chai, a lot of intoxication to keep on going. और इस प्रकार से उनको पढ़ते रहने के लिए कुछ कॉफी, कुछ चाय या फिर कुछ नशा, इस प्रकार से कुछ चाहिए रहता है कि वो इसको आगे बढ़ा पाए। Oh, I remember something. When I was in Europe, I was doing book distribution. मुझे याद है कि जब मैं यूरोप में था तो मैं कहीं पुस्तक वितरण कर रहा था। And it was quite interesting because there was one other seller, he did marketing in phones. और ये रुचिकर था कि एक और जो दूसरा सेलर था वो जो फोन्स हैं उसकी मार्केटिंग विज्ञापन कर रहा था उसका। And he was, for hours, he was so active and so happy on the street. और वो घंटों तक वो बहुत ही खुश था, बहुत ही उत्साहित था सड़कों पे। I was surprised, but after 3-4 hours, he was sitting very miserable, sitting on a chair. ये 3-4 घंटे तक था, और उसके बाद मैंने देखा कि वो बहुत ही दुखी स्थिति में वो ऐसे बैठा हुआ है। So I went to him and wanted to ask him something. What happened with him? तो मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। Sound is not good, huh? हरे कृष्णा। So I came close to him and then I was smelling alcohol. He was drinking during his shop, during his work. तो मैं और मैंने उससे पूछा तो वो जो है
Actually, he can better change for you. नशा Can better change it. This is the whole time problem. You can change with this one. हरे कृष्णा So then it became clear why he was so enthusiastic on the streets and selling his things. तो मैंने उससे पूछा कि वो इतना उत्साहित क्यों था और वो इस तरीके से सड़कों पे जो चीजें बेच रहा था So the whole material world is going on in this kind of illusion. तो जो पूरा भौतिक जगत है वो इसी प्रकार से ब्रह्म है They try to be happy without Bhaktaram, without the center of all the enjoyment. तो वो खुश होने का प्रयास करते हैं बिना भोगता रहते हैं कि वो जो है सभी प्रकार की चीजों को भोगता है Rishabdev is also speaking about it. Rishabdev Upachyana Yam Tehonyam within Nikolam. And Kastam Kamat Arete Fiputan Ye. And Tapo Difam Putakayana Satvam, Sujet Ramasakyam Tonantam. That's and sense enjoyment that can be enjoyed even by the lower animals like hogs who are eating stool. That is not meant for the human form of life. The human form of life is meant for tapasya. And by this he can become purified and come to the mode of goodness. तो ये जो भोग करना है ये तो निम्न योनियों में भी हो सकता है जैसे सूअर की योनियों में पर ये जो मनुष्य जीवन है ये तपस्या के लिए मिला है और इससे हम आगे शुरू कर सकते हैं So this is very, very important. By this the purification of consciousness, then the living entity can come to the Sattva and come to devotion service. तो ये बहुत जरूरी है जिससे हम अपने चेतना का शुद्धिकरण कर पाएं और सत्वगुण में आ पाएं और उसमें हम आगे बढ़ें You can see that also with Ekadashi. Ekadashi is a wonderful day, and if we do this for the pleasure of the Supreme Lords, by this kind of tapasya, actually the living entity can become purified. तो हम देख सकते हैं जैसे एकादशी पे बहुत ही अच्छा दिन है अगर हम इसमें कुछ ऐसे तपस्या करते हैं भगवान के लिए तो हम और अच्छी स्थिति पे आ सकते हैं Prabhupada explaining about Ekadashi, that it is followed all over the world. Actually, the femininity, the hunger problem is actually solved by this. तो प्रभुपाद भी इस विषय में बताते हैं कि अगर ये जो एकादशी है पूरे विश्व में पालन करी जाए तो जो भूखमरी की समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी So that is very, very important. So to come to the mode of Sattva, because all the living entities are absorbed in the mode of Raikakun and Tamakun. तो ये बहुत जरूरी है सत्वगुण के स्थिति में आने क्योंकि जो ज्यादातर जीव हैं वो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में Tadara Yasrama, Kamala Vasajas, Teta Amikam, Stitam Satve Facility, that is explained that adhering to the stream of Bhaktam, Kama and Kauda will go out of the mind and somebody will be situated in the mode of Sattva. ये समझाया गया है कि श्रीमद् भागवतम को पाठ करने से ये जो काम और क्रोध है हमारे मन से निकल जाएगा और हम सत्वगुण की स्थिति में स्थित हो सकते हैं So this is the necessity to get world peace, to get peace in the society, that the living entity is situated in the mode of Sattva. तो ये जरूरत है कि जो जीव है सत्वगुण में स्थित हो और इस तरीके से हम जो विश्व शांति की वस्तु प्राप्त कर सकते हैं Because otherwise this sense gratification, the karma, the four regulated principles cannot be followed by the living entity. वरना ये जो इंद्रिय भोग है जो काम वासना है ये पालन नहीं होगा जीवों के द्वारा First, this consciousness should become purified. तो जो हमारी चेतना है उसको शुद्ध होना चाहिए Sripata Sakta Punya Sadhana Ketan Riyantan Infinity Dritam. That's by listening to the stream of Bhaktam, the Paramatma in the heart, he will purify the heart. He starts to purify the heart. श्रीमद् भागवतम को सुनने से जो परमात्मा हमारे हृदय में है वो हमारे हृदय को शुद्ध करेगा Nastava and Nityam Bhakta Bhakta Utsamate Bhakti Bhakti, and by daily listening to the stream of Bhaktam or serving the pure devotee, irrevocable service will be situated in the heart.
रोज भागवतम को सुनने से और शुद्ध भक्त की सेवा करने से ये जो है हम भक्ति हमारे हृदय में स्थित हो सकते हैं। So this is basic knowledge, but the basic knowledge what will revolutionize the society, what will revolutionize the hearts, and that will come to and real satisfaction of the living entity. Only if the living entity is questioning about Krishna, the Supreme Lord, he can become satisfied. तो ये मूलभूत ज्ञान है समाज के विषय में कि अगर जो जीव है वो कृष्ण के बारे में प्रश्न करने लगे और इसके विषय में जानने का प्रयास करने लगे तो वो अपने और अच्छी स्थिति में हो सकता है। And we can see that even in Krishna's time, in Krishna Lila, that question was already there about how to reach peace in society. तो कृष्ण लीला में भी हम देख सकते हैं कि ये प्रश्न था कि कैसे जो है समाज में शांति लाई जाए। A few days ago, we were also reading very nice sloka in the Srimad Bhagavatam in the temple. तो कुछ दिन पहले इसी विषय में बताया था भागवतम। Namam Saksapratata Kanitam Nakai Pidori Saranapi Devam and Sita Mukhya Asura Manushya Nakutu Vidyadara Saranadaya. That real religious principles can only be established by the Supreme Lord. तो जो सिद्धांत है इसके वो केवल परम भगवान द्वारा ही स्थापित किए जा सकते हैं। And it cannot be established by the siddhas, by the demigods, by the human being, by the asuras, vidyadharas, saranadas. They cannot establish Brahmic principles. और ना कि ये जो धार्मिक सिद्धांत है ना ही देवी देवताओं द्वारा और बाकी अन्य लोग हैं उनके द्वारा ये स्थापित नहीं किया जा सकता। And one problem in the society is that so many Alpa Sampradaya, so many speculations are going on, and new kind of religious principles are inculcated, started. और समाज में समस्या क्या है कि बहुत सारे अपसंप्रदाय, बहुत सारे ऐसे जो अपने अलग कुछ धार्मिक सिद्धांतों को स्थापित कर रहे हैं, ये चल रहा है। In Christianity, you have now 2,000 Christian sects. तो अभी क्रिश्चियनिटी में हम देख सकते हैं कि इसमें 2000 से अधिक वर्ग हैं। And amazingly, they have all kinds of different kinds of Bibles. और हम देख सकते हैं कि सब में कुछ अलग-अलग प्रकार की चीजें देखने को। Maybe not 2,000 Bibles, but there are so many Bibles. Recently, one person, he also got darshan of Jesus, and he started the Mormon sect. तो 2000 से कुछ हमें बाइबल हमें देखने मिलती है और इसमें जैसे कुछ एक सेक्ट है तो उसमें अलग ही कुछ हमें एक देखने मिलता है। And this goes against each other. It goes against each other because by the speculations, by the innovations of new religious principles, the real Dharma will be covered. और ये जो सब है एक दूसरे के विरुद्ध जाती है क्योंकि ये खुद के द्वारा सोची गई है, खुद ही के द्वारा उन्होंने इसको निकाला है तो इसलिए। And we can see that also with Vaishnavism. Vaishnavism for hundreds of years it was covered up, and there was no peace in the Vaishnava community. तो ये हम वैष्णविज्म में भी देख सकते हैं कि ये भी बहुत ही 100 सालों तक इस तरीके से रखा हुआ था और वैष्णव समाज में भी शांति नहीं थी। And it became so degraded that the Vaishnavas were seen by the public, by the people as ordinary, low-fallen people attached to sensitive places. और लोगों द्वारा वैष्णवों को ऐसा देखा जाता था कि ये गिरे हुए लोग हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा इंद्रिय भोग से आसक्त हैं। And for that reason, Bhaktivinoda Thakur and Bhaktivinoda Saraswati Maharaj has to establish the real religious principles again, the real principles of Vaishnavism. और इसी वजह से भक्तिविनोद ठाकुर को और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को जो धार्मिक सिद्धांत है और जो नियम है उनको वापस से स्थापित करना पड़ेगा। But it is the nature of this material world that Dharma is always under attack. Always Dharma will be under attack. तो ये भौतिक जगत का एक सिद्धांत है कि ये जो धर्म है वो हमेशा ही किसी के द्वारा किया जाएगा। For that reason, Vaishnavas have a big duty to do, have a big duty to give the real religious principles in the form of the Bhagavad Gita, in the form of the Srimad Bhagavatam to the living entities.
तो इसलिए ये वैष्णव का एक बहुत जरूरी कार्य है कि वो जो धार्मिक सिद्धांत है वो समाज को दे और जो भगवद गीता की शिक्षा है वो समाज को दे Because the Vaishnava can see where it is going to, where it is going all about. It goes to mystery. Without serving Krishna in this material world, there will be only mystery in the material world. तो हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि बिना कृष्ण को सेवा किए कि इस भौतिक जगत में हमेशा कुंठा और दुखी रहेंगे But at that moment that the Vaishnavas are not following the principles of Vaishnavism, then also they will get more and more problems in their spiritual practice. तो अगर ये जो वैष्णव हैं ये भी इन सिद्धांत को नहीं समझेंगे तो वो भी इसी स्थिति में रहेंगे और दुख में रहेंगे One time the question came to His Holiness Bhakti Vikas Maharaj, one question. तो एक बार परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज के समक्ष एक प्रश्न आया And the question was that when Bangladesh became separated, so many Vaishnavas were killed. How it was possible? तो प्रश्न था कि जब बांग्लादेश अलग हुआ तो बहुत सारे वैष्णव हैं उनकी हत्या हुई थी कैसे संभव हो सकता है And the answer on this question was that they were not following strictly the dharmic principles of Vaishnavism. तो इसका उत्तर था कि वो जो अपने धार्मिक सिद्धांत है वैष्णव के वो उसको कड़ाई से पालन नहीं कर रहे At that moment, many Vaishnavas, Bengali Vaishnavas, Bangladeshi Vaishnavas, were eating fish in the name of Vaishnavism. तो बहुत सारे बंगाली वैष्णव बांग्लादेशी वैष्णव वो मच्छी खाते थे और वैष्णव के नाम So by not following properly the principles of Dharma, Dharma kills. It goes against the living entity. तो धर्म के नियमों का पालन न करने से धर्म हमें ही वापस से आके हमें से क्षति पहुंचाएगा So this is very, very important principle that the Dharma, the principles what is given to the living entities, the four regulative principles for ISKCON devotees, chanting 60 rounds on the mala, that should be followed. तो ये बहुत जरूरी है जो हमें सिद्धांत दिए गए हैं जो 4 नियमों का पालन करना और 16 माला का जप करना तो ISKCON के सभी भक्तों के द्वारा पालन होना चाहिए And we can see that at that moment that these principles are followed, then there will be real auspiciousness in this material world. तो हम देख सकते हैं कि जब ये सिद्धांतों का पालन होगा तो असल में जो सही जो auspiciousness है वो हम देख सकते हैं इस भौतिक जगत में One time when Srila Prabhupada was there, I think in 1976, there was femininity, there was so much problems with, and I think food femininity, yeah. तो एक बार हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद के समय में कहीं पर एक जगह कुछ समस्या थी खाने को लेकर के And that was very interesting. It's also in the science of self-realization, this conversation. और ये बहुत ही रुचिकर है इस विषय में जो संवाद है वो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पुस्तक में भी आता है And the government was writing a letter to Srila Prabhupada that you are such a great person, so many are following you, there's so much femininity, we need people from you, please send people to us to help us. तो जो सरकार है उसने प्रभुपाद को लिखा कि आप ऐसे बड़े व्यक्ति हैं और बहुत सारे लोग भी आपके पास हैं तो आपसे हमें मदद चाहिए और आप कुछ लोगों को हमारे पास भेजिए So that sounds very nice. It sounds very nice, noble kind of thing, humanitarian help. तो जो चर्च है वो इस तरीके से दिखाते कि वो जो मानव समाज है उसकी सेवा कर रहा है We will oppose this, actually. We will oppose to help other living entities, other people from femininity. तो असल में कौन इसका विरोध करेगा कि बाकी मनुष्यों की बाकी मानव समाज की सेवा करने से कौन विरोध करेगा You will expect that the ISKCON Acharya, the main person of the Hare Krishna movement, the founder Acharya, will happily have taken this up and become very much applauded and appreciated by the people of India for this. तो आप देख सकते हैं कि जो ISKCON के संस्थापक हैं तो इनके द्वारा ये कार्य लिया गया और ये बहुत ही सराहे गए भारतीय व्यक्ति Because there it was all about, because he will have
got a very good name, like Vivekananda, welfare activities, all these kinds of things. And it will come in the newspapers everywhere. तो ये इस तरीके से देखा जाता है जैसे विवेकानंद ने बहुत सारे कार्य किए, तो इस तरीके से वो भी विख्यात थे। But Prabhupada, the founder Acharya of the Hare Krishna movement, he wrote back a letter. तो प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं और हरे कृष्णा आंदोलन के, उन्होंने वापस एक पत्र लिखा। And it was very interesting and very important for Vaishnavas actually to understand the meaning of it. और ये बहुत ही रुचिकर है और बहुत ही जरूरी है वैष्णवों के लिए ये समझना इसका। He wrote back that thank you very much for your letter. I appreciate very much. तो उन्होंने लिखा कि बहुत-बहुत धन्यवाद आपके इस पत्र के लिए और मैं इसको सराहता हूँ। And by this, I'm asking you to send people to me to help me in the propagation of the message of the Harinam Sankirtan movement of Chaitanya Mahaprabhu. और उन्होंने बोला कि आप हमारे पास व्यक्ति भेजिए कि जो चैतन्य महाप्रभु का हरे कृष्ण आंदोलन है उसके प्रचार के और प्रसार के लिए। Because by chanting of the holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, all the femininity will be solved, all the demigod will start to cooperate. तो इस मंत्र के जब से जो सारी समस्या है वो सब उनका समाधान हो जाएगा और जो सारे देवी देवता हैं वो भी हमें मदद करेंगे। That was one time. Other time he was also in Andhra. There was a rain problem for so much time. There was no rain, and there was so many problems, drought problems, so many problems by not falling rain. तो ये एक बात है और एक दूसरी जगह की बात है कि वो कहीं पे थे एक जगह और वहाँ पे बारिश की समस्या थी, बहुत समय तक वहाँ पे बारिश नहीं हुई। And then Prabhupada came to Hyderabad. और फिर प्रभुपाद वो वहाँ हैदराबाद में। And Prabhupada was seeing that it must be Krishna's arrangement, so he started Harinam Sankirtan. तो प्रभुपाद देख सकते थे कि ये जो है कृष्ण का हो सकता है और उन्होंने जो हरे कृष्ण मंत्र है सभी। So by the Harinam Sankirtan, after 3-4 days, so much rain came and was falling down. तो ये हरिनाम संकीर्तन जो कि 3-4 दिन तक उन्होंने चलाया, बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पे आई। And all the people understood that it became was by the sacrifice of the Harinam Sankirtan. तो सभी लोग इसको देख पा रहे थे कि ये जो बारिश है ये हरिनाम संकीर्तन की वजह से है। So we as Vaishnavas, we should understand what is going on at this moment and what is the solution for that. तो हम वैष्णव हैं तो हमें देखना चाहिए कि अभी इस समय पे क्या चल रहा है और क्या इसका समाधान है। We are not sitting idly, but the Vaishnava is para dukhi, para dukhi. So he has this kind of consciousness. He cannot see the suffering of other living entities and sits peacefully for himself, nicely in his house and see how others are suffering. तो हम वैष्णव हैं, हम ऐसे बहुत अच्छे से होके ऐसे हम बैठ नहीं सकते क्योंकि जो वैष्णव है वो पर दुखी होता है, वो किसी को इस तरीके से दुख में नहीं देख सकता, जो वो नहीं बैठ सकता। He will look to the formula what he has to do, how he can increase the prasadam distribution, how he can increase in his life the book distribution, how he can preach more to his family members or to friends. So he's breaking his brain about this. तो वो ऐसे बैठता नहीं है, वो सोचता है कि कैसे जो प्रसादम वितरण है उसको बढ़ाया जाए, कैसे जो पुस्तक वितरण है उसको बढ़ाया जाए और वो कैसे अपने परिवारजनों को, बाकी लोगों को इस विषय में प्रचार करे, उनको इस तरीके से उद्धार करे। And he takes inspiration in Srila Prabhupada. Prabhupada was also always busy because it's the only peace formula in this material world to increase the Harikatha in this material world. और वो प्रभुपाद से प्रेरणा लेता है कि प्रभुपाद भी हमेशा प्रचार कर रहे थे और यही समाधान है कि शांति लाने का विषय। In the Second World War in 1944, Prabhupada started the BTG. तो जो दूसरा विश्व युद्ध था तो प्रभुपाद ने BTG चालू की। So that's quite interesting. In wartime, Prabhupada started this because this is the purification what will take place by more and more
the name of Krishna but will be chanted by people who will read the books, the magazines. More and more the purification will take place. तो ये जो पुस्तक है, जो मैगजीन है, बैक टू वर्ड है, तो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ेंगे तो इसके द्वारा और अधिक से अधिक शुद्धिकरण। It's so important that one time one disciple of Bhaktivedanta Saraswati Maharaj, he was telling, oh, this very bad article came, and Bhaktivedanta Saraswati Maharaj was asking him a question. तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के सामने एक आर्टिकल आया और उसमें उनके शिष्य के विषय में कुछ ऐसा लिखा हुआ था। And he was asking, you can count how many times Krishna is coming in the article. तो उसमें कुछ बुरा लिखा हुआ था और फिर वो बोले कि आप देखिए कि इस आर्टिकल में कृष्ण जो नाम है वो कितनी बार आ रहा है। And he was counting, and a certain kind of number of names came, and Bhaktivedanta Saraswati Maharaj was telling it was very successful news article. तो उन्होंने इसकी गिनती की और कुछ बार उसमें कृष्ण नाम आ रहा था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोले कि ये सफल है क्योंकि इसमें इतने बार कृष्ण नाम आ रहा है, तो ये सफल है, भले ये बुरा विषय लिखा है। So that kind of consciousness also was when Prabhupada was in America, and there was actually a very big court case against the Hare Krishna movement. तो इस तरह की चेतना जब प्रभुपाद अमेरिका में थे तो बहुत बड़े-बड़े कोर्ट केस हुए जो हरे कृष्ण आंदोलन ने किया। It was very interesting because it was a big court case actually that is maybe not well known by many devotees. तो ये रुचिकर है कि एक बहुत बड़ा कोर्ट केस था और ये बहुत से भक्तों को पता नहीं है। Because there was a whole brainwash, what's the name of it? But sect behind the people who were paid to brainwash the devotees from their bad ideas. People who were paid to brainwash the devotees from their bad kind of ideas. तो कुछ इस तरीके का आरोप था कि जो लोग हैं वो भक्तों को पैसे देते हैं और लोगों को ऐसे ब्रेन वॉश का नाम बदल देते हैं। Actually, the Jewish people and the Christian people were behind. और जो Jewish people थे और जो लोग थे और जो क्रिश्चियन लोग थे वो इसके पीछे। Because they saw the danger that American youths were changing to the Hare Krishna movement. तो क्योंकि उन्होंने एक खतरा देखा कि जो अमेरिका के नौजवान हैं वो हरे कृष्ण आंदोलन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। So Prabhupada was hearing this, and he became very much enlightened. And he was in India, and in the train for hours, 8 hours, he was drilling his disciples in discussions and defending the philosophy of the Hare Krishna movement. तो प्रभुपाद ने सुना और वो इंडिया में ट्रेन में थे और वो इससे आनंदित हुए और उन्होंने अपने जो शिष्य हैं उनको 8-9 घंटे तक इसके विषय में समझाया और बताया कि कैसे वो जो क्रिश्चियंस और ज्यूइश हैं इनको इनका विरोध कैसे किस प्रकार से कर सकते हैं। And the disciples, they were surprised how much energetic Prabhupada became. Prabhupada became actually more energetic in the fights, like Bhaktivedanta Saraswati Maharaj had also this consciousness. तो जो शिष्य थे वो ये देख के चकित रह गए कि प्रभुपाद इतने उत्साहपूर्वक कैसे हुए और जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है उनका भी ये चेतना हम देख सकते हैं। Because one thing about world peace is not something sentimental. World peace is actually, peace cannot come without a fight. तो ये जो एक चीज विश्व शांति के बारे में कि ये इस प्रकार से जो है भावनाओं पे आधारित नहीं है, ये सब We can see that in our own life. We are fighting against our lower nature, Ichadvesa, Samutana, envy, growth, all this lower kind of demonic kind of entities who are now consciousness. तो हम अपने निजी जीवन में भी देख सकते हैं कि जो बहुत सारे हमारे अंदर काम वासनाएं हैं, क्रोध है, ये भी हम इनसे भी लड़ रहे हैं। And really, it cannot be with a peaceful kind of attitude that you try to have a nice communication with your demonic enemies inside. तो ये बहुत ही शांतिपूर्वक नहीं होगा कि
आप जो अपने अंदर जो आसरिक वासना है आप उनसे न लड़ें। No, it needs Tifrena Bhakti, a rigorous kind of consciousness, rigorous kind of purification by regularly reading 2-3 hours daily, if it is possible, by chanting the Hare Krishna mantra, by doing devotional service, by having sadhusanga. You attack this kind and purify this kind of consciousness. नहीं, हमें इस तरीके से ऐसे बैठना नहीं, हमें जो है रोज जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे पुस्तकों को पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा माला करना, साधना करना, सेवा करना, हमें इसके माध्यम से जो हमारे अंदर आश्रय प्रवृत्तियां हैं और ये जो सब है इनको हमें हटाना होगा। As Gahastas, it's also very, very important to understand this principle. Wherever it's possible, we try to connect ourselves with spiritual consciousness, with Krishna consciousness. तो गृहस्थों के लिए भी ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके वो ये चेतना से और कृष्ण भावना में चेतना से जुड़ने का प्रयास करें, उसमें रहने का प्रयास करें। And it's possible. I know there is one Grahastha in Surat. He's amazing kind of personality. He has big sari shop. तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक हम देख सकते हैं कि एक गृहस्थ है सूरत में और पर वो बहुत अच्छे से And really successful business he's doing, a very open and kind of shop. और उनका जो व्यापार है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, उनकी बहुत अच्छी दुकान है। Normally, if you come from book distribution and you meet this kind of people, they are so busy in material life because they will not have enough. They need expansion on the business, or they need this and that. They are always busy to gain more and more. पर अगर आप किसी और इस तरीके से के व्यापारी को देखेंगे तो वो हमेशा व्यस्त रहेगा या फिर यही सोचता रहेगा कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ा सकूं, कैसे इसमें स्थित रह सकूं। But he has found peace. He gets nice income. He donates a lot for the Krishna conscious purposes in the Hare Krishna movement. परंतु उनके पास जो है वो शांति है क्योंकि वो इसका पालन कर रहे हैं, वो एक अच्छा जो कृष्ण भावनामृत है उसके लिए सहयोग भी देते हैं। He has read 7 times the Srimad Bhagavatam completely. उन्होंने जो श्रीमद् भागवत है उसको 7 बार पूरा पढ़ा। I think that for brahmacharis is all over the world. I'm doubting that we can find one brahmachari who read 7 times the full Bhagavatam. तो मैं ये डाउट कर रहा हूँ कि पूरे विश्व में हमें ऐसे ढूंढना पड़ेगा कि ब्रह्मचारी जो जिसने 7 बार भागवतम को पूरा पढ़ा। At least myself, I cannot put that number. I'm reading now the 5th time. कम से कम मैं तो अभी इस नंबर पे नहीं, मैं भी 5वीं बार भागवतम पढ़ रहा हूँ। So that is, it's possible if the desire is there. Krishna will open the doors. Lakshmi will come. Krishna will be very satisfied if we do nicely service, we do offer our income to Krishna. More Lakshmi will come. That's a principle what is working. तो ये संभव है कि अगर आप कृष्ण को बहुत अच्छे से सेवा करेंगे तो लक्ष्मी जो है अपने आप आएगी। So that is that's very strict kind of relationship the living entity gets with the Supreme Lord. और बहुत ही एक मीठे तरीके का जो संबंध है भगवान के साथ वो जीव का है भगवान के। So this we can see in small, in the micro world that it can happen, and this kind of consciousness that can also come in cities and in nations if these principles are followed Krishna consciousness. तो इस प्रकार की जो चेतना है वो जो सिटी है राष्ट्र में भी आ सकती है कि जब अगर ये जो सिद्धांत है कृष्ण भावनामृत के पालन किए जाए तो। And it's not some dream. The golden age will come back. Now we will see the purification taking place. But the golden age will come back very soon. और ये कोई स्वप्न बस नहीं है, असल में जो स्वर्ण युग है वो वापस आएगा और हम देख भी सकते हैं कि ये हो रहा है। And we can see the established peace in the society. Prithu Maharaj. You can see Prithu Maharaj. तो हम देख सकते हैं कि पृथु महाराज उन्होंने कैसे जो समाज है उसमें शांति को स्थापित किया।
He gave a wonderful example that by putting Panasandana, by putting the Supreme Lord in the center of his ruling of the kingdom, all the citizens were completely satisfied. तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया, आश्रम को स्थापित किया और भगवान को उसके बीच में रखा और जो पूरा उनका साम्राज्य था उसके बीच में उन्होंने भगवान की सेवा को रखा. And by this he got the blessing to the four commands again. और कि ऐसे सिद्धांत को प्राप्त हुए कि जो चार कुमार हैं वो उनके पास. And he was such a big personality, but he was wondering, I don't know what kind of good fortune I got, that you are giving me your darshan. I don't have any good qualities, but I'm very happy to welcome you. पर वो ऐसे थे कि वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे थे कि मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ और बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए. Instead, what we see now, politicians who are coming in the country on the red carpets and walking around like kings, that they deserve it. They're welcome. They are taking the welcome for themselves. और इसके विरुद्ध में हम आज देख सकते हैं कि आजकल के जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस तरीके से रेड कारपेट पे आते हैं, अपना जो है आवभगत कराते हैं और वो खुद ही अपनी जो ये सब है उसको स्थापित करते हैं अपने वर्चस्व. Whatever president, the Indian president, he's come to America, the American president coming to India, such a welcome, and you see that they think, it's nice that they did for me. भले ही कभी भी हो, जैसे कोई भारत का प्रेसिडेंट है या फिर कोई बाहर का प्रेसिडेंट है वो भारत में आ रहा है तो इस प्रकार से उनको दर्शाते हैं. So the destination for the citizens who are following this kind of leader is very dark. The destination for the citizens will be very dark destination now and in the future. तो जो जनता है इस प्रकार के जो लीडर्स हैं उनको पालन कर रही है तो उनकी जो स्थिति है वो भी बहुत ही डरावनी है. Because this kind of states, countries are doomed to be punished by Durga Devi. तो इस प्रकार के जो राष्ट्र हैं वो जो दुर्गा देवी हैं उनके द्वारा So we have a wonderful kind of possibility to engage our energy, to engage our consciousness in the right direction. तो हमारे पास बहुत अच्छी अभी हमारे पास है कि हम जो हमारी एनर्जी है हमारी जो चेतना है उसको हम एक सही जगह से लगा सकते हैं. And by this we will become example for citizens in Nandabar or wherever we are. We will become example by living the principles of Krishna consciousness in our life. और इस तरीके से हम एक उदाहरण बन सकते हैं जो नंदरबार में लोग हैं या फिर कहीं भी कि हम इस कृष्ण भावनामृत का पालन करें और हम इस तरीके से. And that other people will come to this kind of living entities, to ask them where you get this peace from, how you get, be undisturbed in this material world. और बाकी लोग इस प्रकार से भक्तों के पास आएंगे वो पूछेंगे कि आपको इस प्रकार शांति आप कैसे हैं, आप इतने स्थित कैसे हैं. Because that is the way how the preaching can be done. That is how Prabhupada was preaching. Prabhupada was preaching by his spiritual qualities, and all the living entities became attracted by his Krishna consciousness qualities. तो ये एक तरीका है कि कैसे जो है प्रचार किया जाए. जैसे प्रभुपाद वो भी जो अपने आध्यात्मिक गुण हैं उनके द्वारा लोग आकृष्ट होते थे और उनसे आते थे प्रश्न पूछते थे. So this is a small thing what I can tell about the slogan. It's also time. तो ये कुछ बातें मैं बता पाया श्लोक के बारे में. Maybe somebody has some questions or some doubts. इनके कुछ प्रश्न. Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki. हरे कृष्णा. तो हम सबका सौभाग्य है
कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी का एक चमत्कार है, जैसे प्रभु जी नीदरलैंड से हैं और हम सब आशा करते हैं कि हम विदेश में जाए, घूमे फिरे, मगर प्रभु जी नीदरलैंड को लात मार के आए हैं। क्योंकि ये कृष्ण से आकर्षित है ना? तो सब कुछ कृष्ण का है, मगर भारत की संस्कृति अनुकूल है आध्यात्मिक जीवन के लिए, इसीलिए प्रभु जी यहाँ पर आए और अभी हिंदी भी सीख रहे हैं, जो हिंदी में प्रचार कर सकते हैं यहाँ सभी को। तो हम सबका सौभाग्य है कि यहाँ पर आज ऐसे ऐसे भक्त आ रहे हैं जो एक प्रभुपाद की पुस्तक के साक्षात्कार हुआ है। जो ये पुस्तक है प्रभुपाद जी की, उनको पढ़ के ही उनको साक्षात्कार हुआ है। और प्रभु जी विशेषकर विख्यात है प्रभुपाद जी का जो मूल्यवान ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, उसको वितरण करने के लिए। तो हजारों हजारों सेट उन्होंने वितरण किए हैं भारत में और विदेश में, और बहुत सारे मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, उनको भी वितरण किए हैं उन्होंने भागवतम सेट। एडवोकेट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। तो प्रभु जी अकेले जाते हैं, इनको तो यहाँ की भाषा भी नहीं आती, मगर विशेषकर है कि उनका साक्षात्कार जो है पुस्तक को लेकर उस प्रभाव से लोग ले लेते हैं। तो आप सबसे विनती है कि ऐसे जब वैष्णव यहाँ पधारते हैं तो उनकी प्रसन्नता के लिए कोई ना कोई एक पुस्तक आज लीजिए, प्रभु जी सिग्नेचर करेंगे और आपको यादगार रहेगा कि प्रभु जी आए थे, हमने ये पुस्तक ली थी। तो विशेषकर यहाँ पर है पुस्तकें, कुछ नई पुस्तक भी आई है वर्णाश्रम के ऊपर, तो आप सभी उसको पढ़िए। और ये जो कॉन्सेप्ट है शिला प्रभुपाद जी का पूरे विश्व को लेकर, वो बहुत ही विशेष है, वो समझने का प्रयास कीजिए। तो आप सभी का धन्यवाद। और आचार्य प्रभु के लिए हम सभी हरे कृष्ण महामंत्र से उनका उद्बोधन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अब प्रभु जी वापिस आएंगे तो हिंदी में प्रवचन देंगे। किसी को समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं है, मगर आप प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़िए, उसमें सब कुछ क्लियर है और उसी से प्रभु जी ने हमें उपदेश दिए हैं। ओके, हरे कृष्णा। सभी के लिए भोजन प्रसाद है, तो कृपया लेके जाइएगा। हमारे यहाँ उपस्थित है कपिल दूसरा जी, उन्होंने आज का जो स्वीट प्रसाद है वो स्पॉन्सर किया है, उनके लिए भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मंगलवार को हम लोग प्रसाद वितरण और संकीर्तन करने वाले हैं प्रभु जी के साथ। मंगलवार रात को चले जाएंगे, हाँ। तो आप सभी उसमें भाग ले सकते हैं संकीर्तन और प्रसाद वितरण में। हाँ, हरे कृष्ण।